हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया है एक ऐसी डिश जो बहुत ही बेहतरीन है। कैसे अपना बचा हुआ राइस आप यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें चाहिए चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, चॉप ऑनियन, चॉप बेल पेपर, chop cabbage, chop red cabbage, mix vegetables, cottage cheese। अब एक हम पैन लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल, chop garlic, गार्लिक को थोड़ा सौते करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर, अब हम ऐड करेंगे चॉप ऑनियन, चॉप कैबेज, मिक्स वेजिटेबल्स, कॉटेज चीज, अब हम ऐड करेंगे राइस, सोया सॉस, अजीनोमोटो, सॉल्ट, लेमन जूस, चॉप कोरिएंडर, चिली पेस्ट, हम अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। हमारा फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे एक अच्छी सी प्लेट में। क्या बेहतरीन कलर आया है, देखने में ही स्वादिष्ट है, तो खाने में कैसा होगा गाइस। कोरिएंडर चॉप की गार्निशिंग करिए। ये रेसिपी कैसी लगी गाइस, कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।